Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis session. So आजिर क्लास रे आमे डिस्कशन करबा 23rd रो 27th पर्यंत द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस केवल सेही टॉपिक को आज आमे कवर करबा व्हिच आर रिक्वायर्ड एंड व्हिच आर इंपोर्टेंट फॉर ओसीएस मेंस एग्जामिनेशन. सो लास्ट टाइम अनेक गुड इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आमे डिस्कशन करथिले. आई होप समस्त से क्लास कंप्लीट करथिबे एवं तार नोट्स पढिथिबे. So these are the topics that I am going to cover today itself. Why does India need a national security strategy? National security strategy आम ପାଇଁ बहुत important because nowadays we are having a lot of internal security issues. So ये belong କରୁଛି आपनकर internal security issues को. Internal security issues को ये GS3 ର ଗୋଟେ topic. GS3 then air passenger safety. AR passenger safety again it is security related issues upare discussion kariba. Then is India's defense export and international humanitarian law compliance. India's defense export currently India Israel को export करुची arms and ammunitions and there is a Gaza Strip. International humanitarian law violation होची, humanitarian crisis is there. So air related discussion kariba. Then national credit framework, this is a part of your NEP new education policy 2020 रो ये गोटे पार्ट. The most important education sector ऊपर emphasis दिया जिवो एटी. Then Indian pension system, then Indian pension system and the requirements for the future. ये पांचटा important topic मानक ऊपर आज हम discussion करिबा. So before moving to these topics, let's have a quick discussion why current affair is important for us. Why current affair is important for us? मैं already last class मानक discussion करि सारछि both in prelims as well as mains. बर्तमान करंट बेस्ड क्वेश्चन अधिक रु अधिक आसुची, स्टैटिक क्वेश्चन नंबर कमी गलानी ओसीएस एग्जामिनेशन. आपण प्रीलिम्स रो कथा कोंतु बा मेंस. सो फॉर दिस पर्पस हमको एडिटोरियल हिंदू एडिटोरियल हम पई बहुत इंपोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेस दैट यू कैन रेफर लाइक ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. ये गोटे वीकली मैगजीन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर फोकस करे. योजना कुरुक्षेत्र ये मंथली मैगजीन, ये बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज गुरा ऊपर फोकस करछि कुरुक्षेत्र. देन योजना इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज बा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर डिस्कस करछि. देन ज्योग्राफी एंड यू, ये ज्योग्राफी रिलेटेड गोटे मैगजीन डाउन टू अर्थ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड मैगजीन्स. एटा जानिथिबे आपण समस्त साइंस रिपोर्टर जोतरे इंपोर्टेंट साइंस एवं टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज आसे. देन फ्रंटलाइन एंड वर्ल्ड फोकस, दीज आर रिलेटेड टू योर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज. नाउ हमको अधिक रु अधिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर ध्यान देवा पड़िबो. से आपनकर GS1 हो बा GS2 बा GS3 बा GS4 चारिटा पेपर जदि हम देखिबा ये सब पेपर रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन. बेसिक ऑब्जेक्टिव होजे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज बा सोशल डेवलपमेंट, राइट, बा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ताले जते हम न्यूज़ पढुचंदी को टाइप रो टॉपिक को हमें कवर न करबा दरकार बा को टाइप रो टॉपिक को हमें स्किप करबा दरकार. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. व्हाट नॉट टू स्टडी. पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल रिमार्क्स, लोकल पॉलिटिक्स एवं स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, डेथ, अवार्ड ए रिलेटेड इश्यूज को हमें स्किप करबा. ताले को पेपर को टॉपिक मानको ऊपर हमें अधिक रु अधिक फोकस करबा ना इश्यूज रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज गुडा को ऊपर हमें अधिक रु अधिक फोकस करबा. देन कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक बा जोडा अछि हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बा जोडा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जदि किछि इंपोर्टेंट आसुछि ता ऊपर डिस्कशन करबा. देन सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रो जदि किछि इंपोर्टेंट वर्डिक्ट आसेछि जेमति लास्ट टाइम मु डिस्कशन करतली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स आर्म्स एंड ammunitions to Israel. So a PIL was filed before the honorable apex court and it was later on this PIL was dismissed. हैला. So ए टाइप रो इश्यूज को देखिबे जदि किछि कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस अछि बा जदि इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड कोन प्रकार सिग्निफिकेंस अछि बा इंटरनेशनल लॉ रो एप्लीकेशन होउछि ना नहीं, ये प्रकार इश्यू को देखिबे. सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज रे जेमते मु कहबी रिसेंटली आस्थिला हमर जस्टिस हिमा कमिटी रिपोर्ट करंट ऊपर कहूची बा जदि हम कहबा आस्थिला अपराजिता बिल आस्थिला कोडी वेस्ट बंगाल. ए टाइप रो टॉपिक को अधिक और अधिक फोकस देबे. देन सिक्योरिटी इश्यूज रे आज हम दीटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा. दीटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा. एयरवेज रे सेफ्टी इन एयरवेज बा सिविल एविएशन सेक्टर रे केमते सेफ्टी दिया जाय परिबो. Then other type of security issues that we are facing in India, like mu कहबेटी LW left wing extremism ba insurgency in the northeastern states. mu कहली insurgency in the northeastern states, militancy in Jammu Kashmir
मिलिटेंसी इन जम्मू काश्मीर एई प्रकार इश्यू मानक ऊपर हम अधिक रो अधिक फोकस करिवा देन वल्नरेबल सेक्शन को माने वल्नरेबल सेक्शन में आसुचंती वल्नरेबल सेक्शन में को मान आसुचंती मु कहबी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जदि हम देखिबा ताले वुमेन रिलेटेड इश्यूज बा ए जो दुटा टॉपिक हम देखिले ना हिमा कमिटी रिपोर्ट एंड अपराजिता बिल ये वल्नरेबल सेक्शन पई देन मु कहबी थर्ड जेंडर पई जदि किछि इंपोर्टेंट टॉपिक अछि फॉर थर्ड जेंडर फॉर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी बा जदि हम कहिबा फॉर पोर urban poor and rural poor then for children for physically challenged by the pwd कहूचे for old age people for scheduled caste for scheduled tribal population for other backward caste ये सब important topic हमें पढ़िबा दरकार for vulnerable section now जो vulnerable section part देखुचंदी एटा आपन social justice syllabus को cover करिवो वो part it will cover your social justice part most important section ये देन इंटरनेशनल रिलेशन जोटी इंडिया ऊपर यार सिग्निफिकेंस अधिक रु अधिक अछि जेमति कहबी मु आईआर रे बर्तन होचे हमर बांग्लादेश इशू चलिछि बांग्लादेश इशू बा जति कहया बांग्लादेश माइग्रेंट माने इंडिया को अधिक रु अधिक आछन बा नेपाल एंड भूटान स्मॉल कंट्रीज से माने इंडिया को कहउछन इंडिया इज शोइंग अ बिग ब्रदर एटीट्यूड बा जति हम कहबा इंडिया नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट और टॉकिंग टू बी अ विश्वगुरु सो विश्वगुरु कहले हमें कोन बुझे आ इंडिया रो रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी कोन होवा दरकार विश्वगुरु होवा पई हेले हमर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी कोन होवा दरकार इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो रीजन डिस्टर्ब रीजन मानकर जो लॉ लागि छि तार एप्लीकेशन कोन बस ते जगह ने इंडिया रो व्हाट शुड बी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिया लेट्स टॉक अबाउट हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ह्यूमैनिटेरियन लॉ रिलेटेड इश्यूज देखिबा देयर इज अ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल वायोलेशन ऑफ योर नेचुरल राइट्स वायोलेशन ऑफ डिफरेंट नेचुरल राइट्स कोटी गैजेट्स टाइप रे से जगह रे इंडिया रोल कोन होवा दरकार देन येला आईआर रिलेटेड टॉपिक ये टॉपिक को हम सब फोकस करियो सो दीज आर द टॉपिक्स बेसिकली गोटे हिंट्स दोउची बा गोटे ग्लांस दोउची कि को टॉपिक को आपण द हिंदू पढिला बेले फोकस करिवे एवं को टाइप ऑफ टॉपिक को स्किप करि परिवे सो आईआर रो बेसी डीप क्वेश्चन हमर आसीबनी बट जोटी इंडिया इज इन्वॉल्व जो जगह रे केवल इंडिया इन्वॉल्व सेही पार्ट को हमें पढिबा सो आको पढिया पय हेले आपन को सिलेबस प्रॉपर्ली जानिबा दरकार एवं माइक्रो सिलेबस एनालिसिस करबा दरकार प्रत्येक पेपर रो जीएस पेपर रो को टॉपिक को सब्जेक्ट रो को टॉपिक एवं को टॉपिक रो को सब टॉपिक हमें पढुचे मोस्ट इंपोर्टेंट इटा जानिया पय हेले आपन को सिलेबस प्रॉपर्ली जानिया पय पडिबो बा जीएस 1 2 3 4 रो माइक्रो सिलेबस जानिया पय पडिबो मु पूर्वरु ऑलरेडी कहि सारिछि निजर स्टडी रूम रे गोटे बड़ चार्ट करंतु से चार्ट रे 1 2 3 4 जीएस ताको डिवाइड करके सेटे लिखि के रखो सो दैट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आपण इजीली जानि परिबे हैला नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन फर्स्ट आज हम डिस्कशन करिवे अबाउट व्हाई डज इंडिया नीड अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंडिया रे काहे की दरकार जदि हम देखिबा security issues India रे create काहे के होची and this is because of geographical significance India रो geographical significance by security issues are being created on because of geographical cause because of historical कोन ना 1947 ने जेतो इंडिया और पाकिस्तान दीटा कंट्री क्रिएट हेले इंडिया और पाकिस्तान जेतो दीटा कंट्री क्रिएट हेले या परटू ए दीटा कंट्री भीतर हमको कंटीन्यूअस डिस्टरबेंस देखिया पय मिलुछ जदि हम इफ यू एनालाइज द bilateral relationship of India with Pakistan then sometimes it goes to high and sometimes it comes to the peak and low पे जाउची but ये relationship is like just like a stressful relationship this is not a very cordial relationship को टाइप relationship हमको देखिया मिलुची ना stressful relationship between India and Pakistan बुझी पाले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एगुडा को कीवर्ड आपको लिखिबे स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप समटाइम्स रीचिंग द पीक एंड समटाइम्स रीचिंग द लो इशू कोन एटी इन्वॉल्व होई इशू कोन अछि ना द इशू इन्वॉल्वड इज जम्मू एंड कश्मीर इशू इन्वॉल्वड विथ जम्मू कश्मीर बाद हम कहया बॉर्डर डिस्प्यूट इट प्रॉब्लम कोन ना बॉर्डर डिस्प्यूट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम देन नेक्स्ट ज्योग्राफिकल कॉज रे हम कोन लिख परिबा ज्योग्राफिकल कॉज दिस इज अबाउट इंडिया's strategic position in one side in the north we have Himalaya in the south we have the Indian Ocean and जदि हम देखिबा इंडिया रो नेबरिंग कंट्री जेतरा नेबरिंग कंट्री अछंती ये नेबरिंग कंट्री को हम दुई भाग रे डिवाइड करि परिबा
कौन कौन ना गोटे हेले अनफ्रेंडली नेबर, गोटे हेले अनफ्रेंडली नेबर आ गोटे हेले वोलाटाइल नेबर। सो अनफ्रेंडली नेबर किए, अनफ्रेंडली नेबर होचंती यदि कभी चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान एमाने हेले अनफ्रेंडली नेबर। वोलाटाइल नेबर किए एंड द स्मॉल कंट्रीज लाइक नेपाल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, दिस स्मॉल कंट्रीज दे आर वोलाटाइल नेबर। एमाने प्रॉब्लम कौन क्रिएट करचंती, चाइना एवं पाकिस्तान डायरेक्टली दे आर क्रिएटिंग सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। लेट्स टॉक अबाउट एलडब्ल्यूई। चाइना सपोर्ट करूची काहाकू ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, चाइना सपोर्ट करूची लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। की प्रकार सपोर्ट करूची ना बोथ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, बोथ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, financial support and support in terms of arms and ammunition, in terms of arms and ammunition support kurchi China. In the same way Pakistan ka support kurchi na militancy in Jammu Kashmir, militancy in Jammu Kashmir. So Pakistan एठी इंडिया को बा जम्मू काश्मीर यूथ मानकू इनफिल्ट्रेट करूची, बस मानकू जिहाद रिलेटेड कांसेप्ट ऊपर सिखौची, ट्रेनिंग दोची, then they are infiltrating to India, India को आछंती एवं इंडिया को आसला पर they are creating security issues। ताले कोन कहली जिहाद बा जिहादी मानको क्रिएट करी पाकिस्तान इंडिया को से मानको पठिया पर इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करछि। चाइना केमते सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करछि and they are involved with, they are involved with the LW left wing extremism बा जाको में माओवादी बोली कहछि। बुझि पाले से मानको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करछि प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करछि। ये हेले अनफ्रेंडली नेबर मानका कथा कहली। ताली वोलाटाइल नेबर कोन प्रॉब्लम सृष्टि करचंती, एमाने डायरेक्टली किछि इंडिया पे प्रॉब्लम सृष्टि करना, एमाने डायरेक्टली करनांती, एमाने इनडायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करचंती। केतेबेले इंडिया को सपोर्ट करचंती इंटरनेशनल फोरम रे, तो केतेबेले सपोर्ट करचंती हमर अनफ्रेंडली नेबर चाइना एवं पाकिस्तान। बुझि पाले। सो याको दुई भाग रे हम डिवाइड करले। So this is all about the geostrategic location of India. This is related to the geographical cause or historical cause. These are the different causes for which we are having different type of security issues. Then third point जदि मु कहबी, this is the cultural cause. Cultural cause कौन? जदि हम देखिबा India is a diversified country. Unity in diversity, unity in diversity. This is the hallmark of Indian society, hallmark of Indian society. बुझि पारले। ताले हमको एटी कोन देखिया को मिलुची ना यूनिटी देखिया को मिलुची विथ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज देयर बट ता सहित यूनिटी मध्ये अछि। को सेंस रे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दैट वी स्पीक, in terms of the culture, in terms of the food habit, in terms of the wearing style बा clothes that we are wearing, ये सब हिसाब रे जति हम देखिबा इंडिया रे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करछि। अनेक भाषा भाषी रो लोक एटी रहउचंती, विभिन्न प्रकार जाति, विभिन्न प्रकार धर्मर लोक मध्ये रहउचंती। सो देयर इज डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी हेले प्रॉब्लम कोन होय, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज गुड, इट इज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन सोसाइटी। बट यार प्रॉब्लम कोन ना, प्रॉब्लम होउची कि इट हैज सिक्योरिटी इश्यूज और इट क्रिएट्स सिक्योरिटी इश्यूज लाइक कम्युनल वायलेंस क्रिएट करूची, कम्युनल वायलेंस क्रिएट करूची, बा इट क्रिएट्स रीजनल डिस्पैरिटी। कोन करूची ना, इट क्रिएट्स रीजनल डिस्पैरिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट केमति रीजनल डिस्पैरिटी समस्त सुनिथिबे, महाराष्ट्र फॉर मराठास जेतबे बिहार यूपी रो लोक माने बा साउथ इंडिया रो लोक माने जाउतिले महाराष्ट्र को, सेमानको बाहर कर दिया जाउतला, सेमानको बाहर कर दिया जाउतला कोन पई ना, महाराष्ट्र फॉर मराठास। सो इट क्रिएट्स रीजनलिज्म। सो रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करूची बा कम्युनल वायलेंस क्रिएट करूची। जेतबे कावेरी नदी विवाद चलथिला, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, से समय देखिबे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मानक भीतर डिस्प्यूट स्टार्ट हेगला। एई गोटे रिवर वाटर शेयरिंग इश्यू को नेकी कम्युनल वायलेंस क्रिएट हेगला डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड रो बा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट रो लोक मानक भीतर। सो ये आ गोटे ग्राउंड फॉर व्हिच वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। देन इज द टेक्नोलॉजिकल अंडर डेवलपमेंट। कोन कहली, टेक्नोलॉजिकल अंडर डेवलपमेंट। एठी कोन होची, आ पाखे जति कि टेक्निकल असिस्टेंस रहबा कथा बा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होबा कथा सेति कि नै। वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया। हमें डिजिटल इंडिया ऊपर फोकस करूचे। साइमल्टेनियसली एई समय हमको कोन दरकार ना, गोटे सेफ साइबर स्पेस रा आवश्यकता अछि। कोन कहली, व्हाट वी नीड अ सेफ साइबर स्पेस। बुझिला, एटी हमको सेफ साइबर स्पेस मिली पारुनी, जहा द्वारा इन द साइबर स्पेस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स, जाको हमें साइबर क्राइम बोली कहूचे। कोन कहूचे ताको, साइबर क्राइम कहूचे।
साइबर क्राइम इवन साइबर टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउछ टेररिस्ट मानकर रिक्रूटमेंट पई से मानको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया पई से मानको भीतर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करिया पई so technological underdevelopment is also cause for creation of security issues in India ये ला different type of cause ऊपर मैं discuss करी now see एक topic अच्छी कौन ना why India need a national security strategy कौन पाई हमको दरकार ना there are different type of external threats को type रो external threat अच्छी मैं already discuss कली external threat रे we have unfriendly neighbor रे ताले किया आसिले इटे हम देखिले ना चाइना एंड पाकिस्तान ये चाइना एंड पाकिस्तान चाइना पाई एलडब्ल्यू इशू क्रिएट होची एवं पाकिस्तान कौन क्रिएट होची ना टेररिज्म इन जम्मू काश्मीर बा मिलिटेंसी इन जम्मू काश्मीर कहि पाइ ना सो चाइना सहित प्रोब्लेम कौन ये जो अनफ्रेंडली नेबर अछंती एमानक सहित बॉर्डर डिस्प्यूट बा अलगा कौन से टाइप ऑफ डिस्प्यूट इट आल्सो हैव इंपैक्ट ऑन द फाइनेंस और इट हैज इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप माने यदि हम देखिबा इंडिया और चाइना भितर बहुत अधिक ट्रांजैक्शन हुई बा एक्सटर्नल ट्रेड आम जहाँ कहूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना सहित आम पाखे $85 बिलियन ट्रेड डेफिसिट अच्छी यार अर्थ हूँ चाइना रु आम अधिक इंपोर्ट करुचे मोर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड लेस एक्सपोर्ट टू चाइना सो देयर इज अ ट्रेड इनइक्वालिटी खाली ट्रेड इनइक्वालिटी नहीं इट इज एन एडमिटेड फैक्ट that military inequality मध्ये अछि military inequality means in terms of arms and ammunition holding बा सबमरीन होल्डिंग जदि हम देखिबा चाइना पाखरे इंडिया अपेक्षा अधिक आर्म्स एंड एम्युनिशंस बा डिफेंस इक्विपमेंट्स अछि सो देयर इज मिलिटरी इनइक्वालिटी एज वेल एज ट्रेड इनइक्वालिटी इन द सेम वे पाकिस्तान सहित जदि हम देखिबा देयर इज ट्रेड सरप्लस हमें पाकिस्तान को अधिक एक्सपोर्ट करूचे पाकिस्तान नु कम इंपोर्ट करूचे एटी कोन अछि ना एटी ट्रेड सरप्लस अछि त माने हमको एटु लाभ होउची पाकिस्तान केस रे कोन होउची एटी हमको इंडिया को लाभ मिलुची हैला सो बट प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम ऊपर मु डिस्कशन कली हाउ दिस टू कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू मेक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनस्टेबल बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बा इंडिया रे डेमोक्रेटिक सेटअप को से माने केमती अनस्टेबल करिया पई चाहउतन से विषय में डिस्कशन कले थ्रू मिलिटेंसी एज वेल एज थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ एलडब्ल्यू बा माओइस्ट इला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक्सटर्नल थ्रेट रो सेकंड एटी कहली वोलाटाइल नेबर को माने स्मॉल कंट्रीज लाइक नेपाल भूटान एंड श्रीलंका एमाने कोन करथन ना मेनी टाइम्स दे सपोर्ट दिस अनफ्रेंडली नेबर्स एंड मेनी टाइम्स दे सपोर्ट इंडिया सो इंटरनेशनल फोरम रे बा मल्टीलैटरल फोरम रे यार नेगेटिव इंपैक्ट पडुछ हम देन इज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी करंटली देयर इज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी गोइंग ऑन को जगह हम ग्लोबल इंस्टेबिलिटी देखिया पई मिलुची को जगह ग्लोबल इंस्टेबिलिटी देखिया पई मिलुची ना रशिया यूक्रेन वार देन द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी malnutrition hunger then murder of killing of civilians in the Gaza Strip because of Israel-Palestine prolonged conflict. So ये सब कारण मानक पई इंटरनेशनल इंपैक्ट बा ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हमको देखिया पई मिलुची कोन कहली ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखिया पई मिलुची सो इंडिया रे जो एस्पिरेशन अछि टू बिकम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी इट विल बी अ ड्रीम जदि ये सब को हमें समाधान न करूचे ताहले हमें याको अचीव करि परिबानी सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेस नेक्स्ट पॉइंट को हमें आसीबा मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी माने देयर आर इंडिया रे रिलेशनशिप जदि हम देखियो विथ डिफरेंट अलायंस लाइक क्वाड कंट्रीज जोटी यूएसए ऑस्ट्रेलिया इंडिया माने क्वाड कंट्रीज देन ब्रिक्स कंट्रीज सो ऑटोमेटिकली ये कंट्री मानक सहित हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमेटिक एवं डिफेंस नीड अनुसार हमें इंडिया रे बायलैटरल एवं मल्टीलैटरल रिलेशनशिप को सेटअप करू सो इंडिया रा स्ट्रेटेजी ऑफ बैलेंसिंग रिलेशनशिप through this type of alliances it needs a coherent national security strategy यदि हम पाखे प्रॉपर स्ट्रेटेजी न रहिबो हमें मल्टीलैटरल बा बायलैटरल रिलेशनशिप रे बा एमान का सहित डिफरेंट टाइप ऑफ अलायंस क्रिएट करि परिबा नाही क्वाड ऊपर लास्ट क्लास रे गोटे डिस्कशन थिला ऑलरेडी ए कंट्री मान को ऊपर लास्ट क्लास रे गोटे डिस्कशन थिला देखि देबे देन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कोन हम बेनिफिट पाइबा जदि हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बा एनएसएस को अडॉप्ट करूचे ताहाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्ये होबो जे पर्यंत सिक्योरिटी इश्यूज एग्जिस्ट करे गोटे कंट्री रे सेते बेले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हे पारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पई व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट होची सेफ एंड सिक्योर स्टेट कोन कहली सेफ एंड सिक्योर स्टेट अदरवाइज गवर्नमेंट रो अधिक रु अधिक इन्वेस्टमेंट बा एक्सपेंडिचर डिफेंस बा पुलिस स्टेट हिसाब रे खर्च होई जिवो स्टेट रो दुईटा फंक्शन थाए गोटेला पुलिस स्टेट आ गोटेला वेलफेयर स्टेट
पुलिस स्टेट रे स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे टू इट्स सिटीजन्स एवं वेलफेयर स्टेट रे इट प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जदि पुलिस स्टेट हिसाब रे यार फंक्शन बा यार सोशल एक्सपेंडिचर टा अधिक हो जाए ताहले सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर बा वेलफेयर स्टेट करिया पय हम पाखे सेति फंड रहबो ताको हम कहूचे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करबो किए ना जदि हम पाखे सिक्योरिटी एस्टैब्लिश्ड होई अछि now what are the problems for a developing a national security strategy india जदि हम गोटे national security strategy आनिया पय चाहूचे ताले प्रॉब्लम कोन को जगह रे हमको चैलेंजेस फेस करिया पय पडुची बा को जगह रे इशू फेस करूची इंडिया प्रथम प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल हेजिटेशन political why political hesitation let's talk about a specific case of jammu kashmir रे political leader मानकर inherent political leader मानकर self जदि हम कहबा सेल्फिशनेस बा स्वार्थ सेठी लुचि रही जेमति से डिफरेंट वे रे दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत जिंस से माने अर्निंग करते जो स्टोन पेल्टिंग होउतला जतो जम्मू कश्मीर छोट छोट पिला माने आसी स्टोन पेल्टिंग करथिले दे आर प्रोवोक्ड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स सेम टाइम पीरियड रे देखिबे से पॉलिटिकल लीडर मानकर से मानकर निज पिला कोना फॉरेन यूनिवर्सिटी मानकर पढुथुवे सो पॉलिटिकल हेजिटेशन माने there are different type of political parties and those parties they have different type of political parties এবং different political parties they have their different political agenda different political parties they have their different political agenda बुझि पाले so एटी political cohesiveness required बा political party मानन को भीतर support रो आवश्यकता अछि cooperation coordination रो आवश्यकता अछि then second is legal framework रे हम दुईटा जिंस ऊपर डिस्कशन करबा गोटेला इंटरनेशनल लॉ दैट वी हैव एंड द डोमेस्टिक लॉ दैट वी हैव इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कोन अछि बा इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोन अछि बा ट्रीटी कोन अछि जहा को इंडिया मानिबा दरकार एवं ये रिलेटेड डोमेस्टिक लॉ इंडिया रे इंटरनल लॉ कोन अछि दीटा पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करले गोटेला इंटरनल लॉ आ गोटेला एक्सटर्नल लॉ सो एक्सटर्नल लॉ को इंडिया रैटिफाई करिछि ना नै इफ इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू एनी कन्वेंशन ताल से कन्वेंशन को इंडिया रे रैटिफाई करा जायछि ना नहीं दैट इज इंपोर्टेंट एटा कोथरे कहली ना लीगल पार्ट देन इज रिसोर्स एलोकेशन नाउ ये रिसोर्स एलोकेशन हम पाखरे जति के रिसोर्स अछि ऑलरेडी हम जानि छै वी आर रनिंग विथ स्कार्स ऑफ रिसोर्सेस देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी माने कोन कम अछि रिसोर्स हम पाखरे लेस अवेलेबिलिटी कोन कहली ना देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ओ रिसोर्स पर हम डिस्कशन करछे दिस इज अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्स सो ये इकोनॉमिक रिसोर्स हम पाखरे कम थिबा कारणरु फाइनेंशियल रिसोर्स हम पाखरे कम थिबा कारणरु सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होउची बा हम सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करिया पई सिक्योरिटी इश्यूज सहित कोप अप करिया पई से हिसाब रे हमें रेमेडीज बा रेमेडियल मेजर गुडा को अडॉप्ट करि पारमे सो ये होची मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज आउ कोन फेस करछे ना डाइवर्जेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड मिलिटरी लीडरशिप इंडिया रे पॉलिटिकल एवं मिलिटरी लीडरशिप भीतर मध्ये डाइवर्जेंस अछि इन द सेम वे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी भीतर मध्ये अछि military leadership they have a strong domain knowledge of providing security now political leadership they have a very genuine or generic knowledge so it is the divergence create hochi hame security issues ko clearly handle kari pariba nahi then changing threat landscape kon na recently technological development pai हमको देखिया कोन cyber crime बा हम जाउ कोन cyber warfare बा जदि हम देखिया bio warfare साइबर वारफेयर बा बायो वारफेयर हमको देखिया पय मिलुछ यदि हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप न करिबा साइबर टेक्नोलॉजी बा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप न करिबा यदि हमें बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप न करिबा बा सेति रिसर्च एंड डेवलपमेंट यदि हमर सही रेंज रे बा सही रेट रे न हुए देन डेफिनेटली दैट विल क्रिएट सिक्योरिटी इश्यूज सो दीज आर डिफरेंट चैलेंजेस which we are facing for developing a national security strategy ए रिलेटेड गोटे कमिटी थिला जार नाउ छि हुडा कमिटी सो हुडा कमिटी गोटे रिपोर्ट देथिले 2019 रे ये असला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा का अंडर इट वाज क्राफ्टेड एको कोआ जाय हुडा कमिटी रिपोर्ट कोन कोआ जाय एको हुडा कमिटी रिपोर्ट सो हुडा कमिटी कहा का ऊपर डिस्कशन कले नै कहले कि अज्यूमिंग द राइटफुल प्लेस इन ग्लोबल अफेयर रे हमको राइटफुल प्लेस रे पहुंचवार छै काहे कि ना हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एटी कोन हम कहू कि इंडिया गोटे विश्व गुरु होवा पई चाहू कौन कहूचे ना इंडिया गोटे विश्वगुरु होवा पई चाहू सेति हमको राइटफुल अप्रोच पर राइट प्लेस रहिवार आवश्यकता अछि सेकंड एंगेज कॉन्फिडेंटली विथ मेजर पावर्स किए मेजर पावर ना कंट्रीज लाइक यूएसए रशिया चाइना
एमानकर इंडिया तार नेशनल इंटरेस्ट अनुसार ए बिग पावर मानक सहित कोऑपरेट बा कोलैबोरेट करियो एटी प्रॉब्लम कोन होची जो पावर ऊपर हम डिस्कशन करूचे वर्ल्ड रे कंट्री मानक दी प्रकार पावर हिसाब रे चिन्हा जाय कोन कोन ना गोटे हला हार्ड पावर गोटे हला सॉफ्ट पावर हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर हार्ड पावर कोन ना जोठी एटी हम डिफेंस इक्विपमेंट कथा देखुचे डिफेंस स्ट्रेंथ बा मिलिटरी स्ट्रेंथ देखुचे डिफेंस बा मिलिटरी स्ट्रेंथ देखुचे सॉफ्ट पावर कोन एंड दिस इज अबाउट योर कल्चर एटी हम कल्चर कथा देखुचे फॉर एग्जांपल India is trying to be a soft power. It means we are promoting yoga, we are promoting Ayurveda, or we are promoting the Indian culture in the international forum. That is, of India is trying to be a soft power. Hard power, now our strength. If your strength is the defense equipments, if your strength is military equipments, the military strength, then we say country को hard power बोली कहूचे. So USA type of country, UK, Russia, एमान होते hard power. India रो international forum रे बा global forum रे जदि India रो ना अच्छी ताले कौन पाई ना soft power अनुसार. Because India, by virtue of its culture, is well known to all other countries. India is considered to be the country of Mahatma Gandhi and Gautam Buddha. India is considered to be the country which teaches the entire world about ahimsa or non-violence. Sethipai India is a soft power. Jethola ame Israel conflict re, when India is supplying or exporting arms and ammunition, defense equipments to Israel, doesn't it contradict this concept of soft power, being a soft power or being a Vishwaguru? Because soft power ऊपर हमें discussion करूचे यदि हमें only talking about the cultural promotion by soft power ताले मेटी we are using indirectly we are using or directly we are using this hard power defense equipment. So this is a contradictory phenomena that India is showing or contradictory multilateral approach. हुडा committee report कहउचंदी कि engage confidently with these major powers USA UK Russia सहित हमको confidently engage हबार अछि बा cooperation करबार अछि. मिडिल ईस्ट कंट्री मानक सहित हम एनर्जी ट्रेड एवं सिक्योरिटी ग्राउंड रे कोलैबोरेट एवं कोऑपरेट करिया दरकार काहे कि ना एनर्जी पय हम डिपेंडेंट ए रीजन ऊपर सिक्योरिटी ग्राउंड रो मध्य दिस इज वन ऑफ द वे इंडिया को जदि हम देखियो दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू व्हिच वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैला सो मिडिल ईस्ट कंट्री मानक सहित मध्य एनर्जी ट्रेड और सिक्योरिटी रे हम राइटफुल प्लेस रे आ प्रॉपर वे ले हमें एंगेज होवा दरकार ताले मैं कौन डिस्कशन करूचे हम डिस्कशन होची इंटरनेशनल अफेयर रा इंपैक्ट कोन कहा पर डिस्कशन करूची इंटरनेशनल अफेयर रा इंपैक्ट कोन ऑन इंडियास इंटरनल सिक्योरिटी तबरा सेकंड पॉइंट जस्टिस हुडा कमिटी रिपोर्ट कोन कहले ना अचीविंग अ सिक्योर नेबरहुड अचीव करिया बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड हार्ड पावर सिक्योर नेबरहुड अचीव करिया सो अनफ्रेंडली नेबर मानक पई यूज हार्ड पावर फॉर एग्जांपल the countries which are picking up arms and ammunition against us at that point of time we cannot show soft power se jagare we have to deal it with a very strong hand we have to respond through a very strong hand ebong soft power ame ko jagare dekheba in case of small countries like Nepal like Bhutan Sri Lanka Bangladesh ei jagare ame soft power dekheba hard power ko dekheba darkar na in case of countries like China and Pakistan because they are picking up arms and ammunition or they are provoking militancy outfits or militant works militant activities in India or insurgent activities in India LW activities in India that's why we have to deal all those anti-national factors with a strong hand but with hard power. Now third point is about resolution of internal conflicts. India रे हमको अनेक गुडे internal conflict मध्ये देखिया पाई मिलुछ खाली external impact पडुनी या सहित हम जो देखियो रीजनल डिस्पैरिटी कम्युनल वायलेंस मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बाधा को माओइज्म बा नक्सल बोली कहउचे फ्रॉम नेपाल रो पशुपति रु तेलंगाना रो तिरुपति पर्यंत ये सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मध्ये हमको रिजॉल्व करबार आवश्यकता अछि प्लस ग्लोबल एवं डोमेस्टिक risk ru we have to protect our own citizen as a police state it should be responsibility of the state to provide protection to its own citizens from whom from the global risk as well as from the domestic risk आउ ये कोन कहउची ना strengthen capability strengthening करिवा land एवं maritime border को secure करिवा cyber command technological upgradation बा technological development कला परे ये कुछ cyber command को develop करिवा cyber command को development करिवा so येला these are five important recommendations of हुडा कमिटी याको मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट है
नाउ वर्तमान देखिए हमें व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया। इंडिया रे हमको को टाइप रो सिक्योरिटी थ्रेट देखिया पाई मिले ना। फर्स्ट मुझे डिस्कशन कली कहा परे ना। फर्स्ट डिस्कस्ड अबाउट एलडब्ल्यूई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सेकंड इज अबाउट योर मिलिटेंसी। देन आउ कोन देखिया को मिलुची हमको ना इंसर्जेंसी देखिया को मिलुची। देन यू हैव कम्युनल वायलेंस। देन इज साइबर सिक्योरिटी आउ कोन देखिया पाई मिलुची प्रॉब्लम हमको कम्युनल वायलेंस साइबर सिक्योरिटी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बा सिक्योरिटी थ्रेट्स टू बा कोस्टल सिक्योरिटी ए टाइप रो सिक्योरिटी थ्रेट हमको देखिया मिलुची। जोटा हमें देखले एलडब्ल्यूई एठी सपोर्ट कहार रहउची ना एक्सटर्नल फैक्टर सपोर्ट जदि हम देखिया बाय चाइना। एटा कोड को पर्यंत अछि ना पशुपति रु तिरुपति फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति को फेमसली कहा जाए। एमान को नक्सल बोली मध्य कहा जाए समस्त जानिथिबे दे आर नोन एज नक्सल्स। सो नक्सल इंसिडेंट इंडिया रे वर्तमान इंक्रीज होउची। देयर इज अ इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ नक्सल इंसिडेंट्स इन इंडिया। देन मिलिटेंसी हमको कोड देखा जाउची ना बेसिकली जम्मू काश्मीर रे देखा जाउची। ये गोटे टर्म रो आसीची मिलिशिया अर्थ होची टू राइज अप अगेंस्ट हूम टू राइज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट बा टेररिज्म हम जा कहू। टेररिज्म आसी गोटे टर्म कोन फर्स्ट देख परियो टेररिज्म आसी गोटे टर्म टेरर अर्थ होची टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ पीपल क्रिएटिंग फियर इन द माइंड ऑफ पीपल हैला। देन इंसर्जेंसी एटा हमको कोड देखले मिलिटेंसी हमको जम्मू काश्मीर देखिया पाई मिलुची। सो एठी कहार हेल्प रहउची बा कहार सपोर्ट रहउची ना विथ द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिहाद रिलेटेड कांसेप्ट एठी सिखा जाउछ माने जिहाद। इंसर्जेंसी रो अर्थ कोन इंसर्जेंसी आसी गोटे टर्म इंसर्ज रो अर्थ होची टू और इंसर्ज रो अर्थ कोन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंसर्ज करी अगेंस्ट हुम ना अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो बेसिकली एटा हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट माने करे देखा जाउछ। इट इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देन कम्युनल वायलेंस डिफरेंट कम्युनिटी भीतर वायलेंस एटा भी मैक्सिमम हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे देखा जाए कम्युनल वायलेंस। देन साइबर सिक्योरिटी ऊपर समस्त जानि छन साइबर अटैक्स बा डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। एटी कोन होची ना साइबर अटैक्स बाकी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम देखिया पाई मिलुची। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यार अर्थ कोन फंडामेंटलिज्म रो अर्थ होची मु जहा कहूची ठीक अन्य माने जहा कहउचंदी भूल। ता माने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म रो अर्थ होची मोर रिलीजन जहा सिखौची दैट इज करेक्ट एंड अदर रिलीजन से माने जहा सिखौचन दैट इज रॉन्ग। सो इट क्रिएट्स रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट ना। कोस्टल सिक्योरिटी इंडिया रे जदि हम देखिया वी हैव 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। So simultaneously this coastline acts as a resource for us या हम पाए resource as well as so this is the source of internal security issues in India हला। जदि हम देखिबा as per media report and intelligence report many of the security activities or insecurity activities जहां इंडिया रे क्रिएट हेची से माने एंट्री करचंदी कहा थ्रू ना थ्रू द कोस्टलाइन इंडिया रे कोस्टलाइन थ्रू से माने इंडिया को आछन। So these are different types of security threats that we are facing in India. So finally जदि हम देखिबा conclusion एटी conclusion कोन लिखबे दिया हेची देखिबे आप समझते national security document this is an urgent need this is not just about defense this is linked closely to all other priorities like increasing or developing the economy. So नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट यार हमें वन साइड देखिबानी कि ये केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया को जाउची रादर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे आर वेरी मच लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच क्लियर विथ दिस स्कीम। या पर जहां डिस्कशन कली समस्त बुझी पाले या पर क्वेश्चन कोन आसी परिबो गोटे दिना क्वेश्चन दे दउची करिवे समस्त।
Define national security document is need of the hour. Need of the hour. Discuss. ये क्वेश्चन करिए. सेकंड, briefly discuss different types of security issues in India. Third, external factors influence India's internal security. Elaborate. Tinita question dechi, important question. So please try to answer these three questions. 15 mark ro question हिसाब रे generally average कहूची 20 और 10 mark रो question आसे, but try करंतु 250 ରୁ 300 words भितर यार आंसर लिखिया पई. 250 ରୁ 300 words भितर आंसर लिखिया पई चेष्टा करियो. So this is how we will cover current issues. बा हमें जदि हमें देखिबा जीएस स्पेसिफिक इश्यूज एई वे रे हमें कवर अप करिया पूरा बिफोर द एग्जामिनेशन सब टॉपिक मु कवर करिवि. कोऑपरेट करके आपन को परिश्रम करियार अछि. नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक ऑन एयर पैसेंजर सेफ्टी. This is again very much linked to your security. ये न्यूज रे काहे कि अछि ना, रिसेंटली देयर वाज एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर एवं वाकी टॉकी रे एक्सप्लोजन हेतिला कोडी ना लेबानन रे. एथि पई एटा वर्तमान न्यूज रे अछि. इंडिया रे जति हमें देखिबा एविएशन सिक्योरिटी 1970s 80s रे हमको हाईजैकिंग देखिया पई मिलुथिला. देखिबे टेरर ऊपर बहुत बडे मूवी आसे जोटी टेररिस्ट माने से प्लेन भीतर पस्तिबे एवं प्लेन भीतर गला पर हाईजैक करनेबे. प्लेन हाईजैकिंग देखिया को मिलुथिला. वर्तमान पोस्ट 9/11 अटैक बा 2011 परे हमको डिफरेंट अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज देखिया पई मिलुछि. आ या परठु 9/11 अटैक बा 2001 नो या अटैक it created a history or it gave a very strong message to the entire world to strengthen their aviation securities. India रे वर्तमान स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमको कोन देखिया पई मिलुछि. किछि वीवीआईपी एवं वीआईपी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन एंड वेरी इंपोर्टेंट पर्सन they are exempted from security check. सेमानकर सिक्योरिटी चेक हबन. प्लस या सहित देखिबे जो फ्लाइट मोड अछि आपन को फोन में कोन पाई अछि. फ्लाइट रे बसला से फ्लाइट मोड ऑन करिया. फ्लाइट मोड ऑन करा जाउ नाही बा फ्लाइट मोड रिलेटेड रूल को कंप्लायंस करा जाउ सो दैट इजीली ट्रांसमिट से माने करछंदी कोन ना कम्युनिकेशन होउची बाहर लोक मान सहित बा टेररिस्ट मान सहित हे परछ. प्लस आउ कोन प्रॉब्लम एटा हम कहली ऑलरेडी वीवीआईपी इश्यूज ऊपर कहली. वीवीआईपी इश्यूज ऊपर कहली. सो वीवीआईपी मानकर स्टाफ माने समानकर लगेज को हैंडल करिवे समान तो निजे नेबेनी. सो इट कैन बाईपास द सिक्योरिटी चेक. वीवीआईपी के निजे देखि जिवे देखिछ तांकर लगेज तांक पाखे लोक थिबे जे तांकर लगेज नै कि जिवो. सो जे तांकर लगेज नै कि जिवो से माने वीवीआईपी मानकर जे सिक्योरिटी बा से मानकर जे जो माने थिबे तांकर स्टाफ से माने वीवीआईपी को ऊपर नॉर्मली समस्त मार्क करथि. सो इट सिक्योरिटी चेक बाईपास हो जाउछ एई कारण मानक पय. ताले हमें कोन करि परिबा व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. प्रॉब्लम कोन कहि देली डायरेक्टली सॉल्यूशन को आसुछ. कोन सॉल्यूशन मेथड हमें अडॉप्ट करि परिबा. एठी ना प्रथम होउची बैन ऑफ वाईफाई ऑन फ्लाइट रे हम वाईफाई को बैन करा जाय. सिग्नल सील्ड एट एयरपोर्ट जो गुडा का डेंजरस सिग्नल आसुची. डेंजरस सिग्नल को दिस वेरी मच डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. ये कहउची ब्लॉक करिवो कहा को ना डेंजरस सिग्नल गुडा को ब्लॉक करिवो. ये कौन करिवो ना ब्लॉक करिवो डेंजरस सिग्नल. प्लस जो गुडा का वीवीआईपी एग्जेम्पशन अछि ये कुछ वीवीआईपी एग्जेम्पशन को रिमूव करो. देन मोबाइल फोन फ्लाइट रूल एनफोर्स हो. मोबाइल फोन फ्लाइट रूल माने यदि मोबाइल फोन कैरी करछन्दी फ्लाइट रे ताले व्हाट शुड बी द रूल
को वे रे ताको हैंडल करिवे केमती यूज करिवे न करिवे ता ऊपर गोटे रूल आस एवं प्रत्येक पैसेंजर दे हैव टू अडहेयर टू ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस देन जो गुडा रिस्की डिवाइस अछि देयर शुड बी अ बैन ऑन दिस रिस्की डिवाइस ये रिस्की डिवाइस ऊपर बैन लागिवा दरकार कोन कहली देयर शुड बी अ बैन ऑन दिस रिस्की डिवाइस ये गला किछि वे फॉरवर्ड कहली या पर अधिक डिस्कशन करूनी एयर पैसेंजर सेफ्टी ऊपर ये टॉपिक पुनी आसीबो आगो को देन वी विल डिस्कस now come to next topic India's defense exports and international humanitarian law compliance now international humanitarian law compliance रे what is India's stand by the time देखिवा what is India's role or what is India's liability हमको कौन करवा दरकार now एटा बुझिया पाई हेले let's have a look on the article 1 of Geneva Convention article 1 this is binding on India it obligates all states to respect and to ensure respect for IHL or international humanitarian law so international court of justice Nicaragua versus United States रे इति कहले कि नेगेटिव इट इम्पोज्ड नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट कि प्रत्येक स्टेट को नेशन स्टेट को दे हैव टू अडहेयर टू दिस आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन हैला so the countries different countries they are under obligation not to supply weapons to a country if there is an expectation based on facts or knowledge of past patterns that such weapons would be used to violate the convention यार अर्थ होची ये कन्वेंशन कहूची जदि आम पाखरे किछि पूर्वरु प्रेसिडेंट अछि कि गोटे कंट्री आर्म्स एक्सपोर्ट कला पर आ गोटे कंट्री को दैट विल वायोलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ then the country will not supply arms to other countries. Now let's talk about the humanitarian crisis happening in the Gaza Strip because of prolonged Israel and Palestine conflict. There is high incidence of poverty, malnutrition, hunger, unemployment. ये सब socio-economic issues को छाड़ी दियंत. Now the civilian lives that is in danger. ये crisis रे many civilians they are being killed by the security forces. Unnecessary bomb drops. Unnecessary firing ये सब कौन करछि ना it violates their human rights it violates their natural rights the right to life article 21 देखुचंती Indian constitution it provides the same life to the Indians as well as the foreigners citizen मान को मध्ये ये same right होछि apart from this at right to life this is a human right रो अर्थ by virtue of human गोटे मनुष्य हबा द्वारा हमको जो rights मिलछि ताको human right कहै this is a natural life is not given to us by the government by the state rather it is a natural process it has been given to us by virtue of nature we have received this right therefore it is a natural right so there is the violation of natural rights or human rights article 21 in this Gaza Strip ये कहूची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो नेगेटिव ऑब्लिगेशन एटी कोन देले ना जदी कोनोसी स्टेट आर्म्स एंड एम्युनिशंस एक्सपोर्ट करूची टू अदर स्टेट को सप्लाई करूची एवं तार कॉन्सिक्वेंस कोन जदी तार कॉन्सिक्वेंस पई कोनोसी भी कारणरो कॉन्सिक्वेंस हिसाब रे जति ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुए देन द जो स्टेट सप्लाइंग स्टेट ता ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन लागुची नॉट टू एक्सपोर्ट दोज आर्म्स एंड एम्युनिशंस और डिफेंस इक्विपमेंट्स टू द कॉन्ट्राडिक्ट जो स्टेट रे डिस्टर्बेंस अछि डिस्टर्ब रीजन को से सप्लाई करिवो नाही हैला सो इट प्रॉब्लम हमको बेनिफिट कोन होची दिस इज द जेनेवा कन्वेंशन दिस इज अ वायोलेशन ऑफ कमिटमेंट टू द जेनेवा कन्वेंशन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हम पाखे जहा अछि हमें ताको एटी या थ्रू हमें ताको एटी वायोलेट करूची तो व्हाट इज द लीगल गैप What is the legal gap? UK रे जदि हम देखिया they have their internal laws कोन अछि UK रे गोटे लॉ अछि एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ये कोन करछि ना एक्सपोर्ट को कंट्रोल करछि एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट एक्सपोर्ट ऑफ योर डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट को ये एक्ट कोन करछि एटी ना कंट्रोल करछि बुझेला यूरोपियन यूनियन रे लेजिस्लेशन करछि इन द सेम वे इंडिया रे हम पाखरे किछि लॉ नाही इंडिया रे सेमति किछि लॉ नाही हम पाखरे जदि हमें दीटा लॉ को मिसई के देखिबा गोटेला इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एवं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 it empowers the central government to regulate export of designated goods relevant to India for various reasons एही दीटा एक्ट अनुसार जदि हमें देखिबा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाउची नॉट टू एक्सपोर्ट आर्म्स एंड एम्युनिशंस टू द फॉरेन कंट्रीज जो जगह रे ह्यूमन राइट्स रो वायोलेशन होउची बुझि पाले बट डायरेक्ट लॉ किछि सेमति किछि लॉ लाइक एटा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट हम पाखरे किछि नाही तले ठेमे कोन करि परिबा अदर स्टेट मानको पाखरे देखिले अदर स्टेट्स दे हैव
देयर ओन एक्ट्स इंटरनेशनल लॉ इंडिया पाखरे किसी इंटरनेशनल एक्ट नाही बट इंडिया को बेनिफिट कौन होची मन रखंतु डिफेंस इक्विपमेंट जेतले हम सप्लाई करते गुडाकर प्राइस बहुत अधिक थाए तो ये हमर एक्सपोर्ट बढ़ी जाउची एक्सपोर्ट ग्रोथ को कारण मानक पई एठी एक्सपोर्ट अधिक होउची why there is a growth what are the growth drivers for India's defense export बढ़ुची काहे की ना बढ़ीवार कारण होची पॉलिसी रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स so like defense production and export promotion policy 2020 ये डिफेंस प्रोड्यूस्ड आइटम गुडा को एक्सपोर्ट करिया पई प्रमोट करूची सो इंडिया रा ऑब्जेक्टिव कोन ये पॉलिसी रा ऑब्जेक्टिव होची $25 बिलियन टारगेट $25 बिलियन ये अचीव करिवो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करी बाय 2025 हला सो यूएसडी केते ना 5 बिलियन रो एक्सपोर्ट हो प्राइवेट सेक्टर रो पार्टनरशिप मध्ये डिफेंस सेक्टर रे बढ़ी सारी केवल गवर्नमेंट नाही इटी प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप रे मध्ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोर्ट करछ हम डिफेंस इक्विपमेंट माने देन जदि हम देखिए डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ so this is the forefront of this effort budget कहते ना 23,855 crore financial year 2024-25 प्लस कॉम्पिटिटिव क्वालिटी एवं कैपेसिटी क्वालिटी एवं प्राइस दोची इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज क्वालिटी बेटर क्वालिटी रो इक्विपमेंट्स एवं कम पैसा रे प्रोवाइड करूची एही कारण मानक पई इंडिया रो डिफेंस सेक्टर वर्तमान ग्रोथ करूची सो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को जगह अछि यूरोपियन यूनियन रे अछि देन आपनकर यूनाइटेड किंगडम्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन अछि ये गोटे लीगल फ्रेमवर्क जे कोन करछि ना आर्म्स कंट्रोल ऊपर ब्लॉक लगौछि बा आर्म्स कंट्रोल न करिया पई कहउछि डिस्टर्ब रीजन मान इन द सेम यूनाइटेड किंगडम्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ये यूके गवर्नमेंट रिव्यूज आर्म्स एक्सपोर्ट फॉर कंप्लायंस विथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑब्लिगेशंस it assesses the risk that exported arms might be used to commit violation of international convention न हो सेति पई ये एक्ट फोकस करछि देन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ये ट्रीटी कहाँ ऊपर फोकस करूची ना ये आर्म्स एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करूची इफ देयर इज अ नॉलेज दैट दे विल बी यूज्ड फॉर वार क्राइम्स यदि आपको वार क्राइम पई यूज करा जीवो ताले आर्म्स ट्रेड ट्रीटी प्रोटेक्शन दोची बा प्रोहिबिट करूची नॉट टू एक्सपोर्ट दोस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैला सो इंटरनेशनल लॉ जदि हम देखिबा दीटा इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट अछि हम पाखे द फर्स्ट इज द जेनेवा कन्वेंशन सेकंड वन इज द आईसीजे by International Court of Justice of President. Geneva Convention को India is a signatory. Geneva Convention को India is a signatory. So Article 1 अनुसारे प्रत्येक nation state they should refrain from supplying weapons to these to the regions where there is a violation of the convention. यदि ये convention ना कोनो से अगर violation होची ताला में export को बंद करिबा दरकार. Then ICJ रा प्रेसिडेंट कोन अछि मु ऑलरेडी कहली निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स रे ए केस रे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहले नेगेटिव ऑब्लिगेशन इंपोज होची कहा पर ना प्रत्येक नेशन स्टेट ऊपर से माने एक्सपोर्ट न करंतु कारण कोन ना वेपन एक्सपोर्ट न करंतु टू अदर रीजन्स जो जगह रे वार क्राइम होची बा जो जगह रे इंटरनेशनल लॉ रो वायोलेशन होची सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज जो सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कशन करूचे बा एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करूचे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आपको समस्त पढ़िबे ठीक भाबरे जदि डाउट हुए मते पचारिबे थ्रू द कमेंट सेक्शन नाउ कम टू द फोर्थ टॉपिक ऑन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कहले हमें कोन बुझे दिस इज अ पार्ट ऑफ योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 so it has been jointly developed by different institutions including CBSE your NCERT right NCERT then Ministry of Education DGT Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So all of these ये समझते they are the stakeholder of this national credit framework. ये फोकस करछि कहां पर ना ये कहउछि एलिमेंटरी स्कूल हायर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग ये सब रे लर्निंग को इंटीग्रेट करछि कहां सहित ना स्किल डेवलपमेंट सहित ये कहउछि क्लासरूम लर्निंग प्लस प्रैक्टिकल स्किल ता माने कहां पर फोकस करछि क्लासरूम लर्निंग माने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल स्किल ये दीटा ऊपर फोकस करछि ये कहउछि डाइवर्स एक्टिविटीज लाइक रिसर्च हैंडीक्राफ्ट योगा इंटर्नशिप ये सब करी मध्ये आपण क्रेडिट अचीव करि पारिबे पूर्वरु क्रेडिट अचीव करथले दीटा वे रे आइदर परीक्षा दउतले इंटरनल परीक्षा बा सेमेस्टर एंड रे परीक्षा प्लस असाइनमेंट सबमिशन एति की करी कि क्रेडिट अचीव करथले ये किछि नुवा पॉइंट ऐड करछि एथिरे जेमति कि योगा करिवा जेमति कि
मेडिटेशन करि परिबे बा इंटर्नशिप करि परिबे बा हैंडीक्राफ्ट रिसर्च करके आपण क्रेडिट अर्न करि परिबे सो जो माने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे शुड अडॉप्ट एनसीआरपी एनसीआरएफ कोन पाई ना टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट एवं एजुकेशन भीतर ये गैप को मिनिमाइज करियो so एठी students will be prepared both for employment as well as for self employment जो स्किल बेस्ड लर्निंग थिबो से मानक पाखरे स्किल बेस्ड लर्निंग थिबो ताको से माने अचीव करि परिबे जोटा पूर्वरु लास्ट क्लास रे मु गोटे पॉइंट ऊपर डिस्कशन करथली आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल कोन कहली रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एठी कोन होतला ना पूर्वरु जो स्किल अछि ये स्किल टा को रिकॉग्नाइज करा जाऊ कोन कहू हमें पूर्वरु थिबा स्किल टा को रिकॉग्नाइज करा जाऊ ताने प्रॉब्लम कोन होछि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन ना देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज जो माने ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनल फैकल्टी एमाने कन्वेंशनल टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करि सारचंती एवं दे डोंट वांट फॉर चेंज इन दिस एजुकेशनल सिस्टम ये सिस्टम को से चेंज करिया पई चाहना आउ कोन अछि ना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स कोन कहली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स अनेक गुडे स्कूल कॉलेज स्पेशली जो गुडा रूरल एरिया रे अछन से मानक पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रिसोर्स नाही से मानक पाखरे प्रैक्टिकल स्किल नाही ट्रेनिंग स्किल नाही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नाही मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज नाही देन आउ कोन अछि देयर इज असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन सो यूनिफॉर्म सिस्टम आम पाखरे किछ नाही फॉर क्रेडिट एक्युमुलेशन हम पाखरे किछ यूनिफॉर्म सिस्टम नाही so it is very much difficult or complicated or complex procedure to standardize करिया पय हमको एटी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सृष्टि हो तो ये वाला challenges in case of implementation last topic को आसीबा on Indian pension system ये गोटे important topic social security रे हम पढी परिबा यार ऑब्जेक्टिव कोन पेंशन नो ऑब्जेक्टिव कोन पेंशन इज लाइक अ ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट तमने विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पेमेंट दोची गवर्नमेंट ताको में ट्रांसफर पेमेंट कहूछ अलगा ट्रांसफर पेमेंट रो एग्जांपल कोन ना स्कॉलरशिप सो एटा फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिवो रिटायरमेंट पर जेतु इंडिया रे डेमोग्राफिक चेंज होउची ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ीबे आगो पूर्व क्लास में डिस्कशन करथि एडिटोरियल क्लास में केमति डेमोग्राफिक चेंज होउची एवं केमति इन फ्यूचर केमति डेमोग्राफिक बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस ओल्ड एज पॉपुलेशन इंडिया रे इंक्रीज करिवो सेति पे हमें देखुचे देयर इज इकोनॉमिक शिफ्ट एवं डेमोग्राफिक चेंजेस सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मध्ये चेंज होउची सेति पे इंडिया रो पेंशन सिस्टम को हमें फोकस करूचे करंट स्ट्रक्चर कोन ना देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कीम्स like employees provident fund national pension system and other private saving options so government basically private sector employee मानक पई बा एमन जो मन देखिबा there is a defined contribution plan like nps mutual fund बा अटल पेंशन योजना यार ऑब्जेक्टिव कोन ना जो माने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे अछंती अटल पेंशन योजना यार ऑब्जेक्टिव कोन ना जो माने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे अछंती से मानक पई pension provide करियो then second is challenges of an aging population gradually problem face करछि dramatically grow करूछि इंडिया को जो हम यंगिस्तान कहउतले बा यूथ पॉपुलेशन अधिक थिला बर्तन यूथ पॉपुलेशन कमी की ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ुछि कोन होजेटी ना ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज होछि हैला so को by 2050 nearly 20% of the population may be over 60 years old तामाने ये प्रेशर पकोची कहां पर ना ऑन द एक्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम यदि 60 ईयर रु अधिक 60 ईयर रु यदि अधिक लोक मानकर नंबर बढ़िबो तामाने पेंशन स्कीम ता अधिक स्ट्रेंथन होवा दरकार तो एटी एक्सक्लूड हो जंते को माने ना इनफॉर्मल सेक्टर रे इंडिया रा 90% ऑफ वर्कफोर्स दे आर वर्किंग सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस फॉर्मल पेंशन स्कीम्स एमानकर प्रॉब्लम कोन ना अनप्रेडिक्टेबल इनकम रे चेंजेस कोविड आसी गला इनफॉर्मल सेक्टर ऊपर अधिक इंपैक्ट पकेला टेक्नोलॉजिकल चेंज हो एमानक ऊपर इंपैक्ट पकेला हैला सो देयर इज लो अवेयरनेस एम्प्लॉयर माने मध्ये कम सपोर्ट करचोनी मानक
एम्प्लॉय मानकर लेस सपोर्ट देन लो कंट्रीब्यूशन रेट को मानकर जदि हम देखिबा जो माने फॉर्मल पेंशन ने एनरोल करिसेंती सेठी कंट्रीब्यूशन रेट इज रिलेटिवली लो ईपीएफ रे कंट्रीब्यूशन होची मात्र 12% किए कंट्रीब्यूट करिवो आपण एम्प्लॉयर रा कथा कोन बा बाय द गवर्नमेंट कोन सो ऑटोमेटिकली एटी कंट्रीब्यूशन रेट लो हो जाउछ तो टोटल पेंशन मध्ये एटी कमी जिवो सो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ इंपोर्टेंट स्कीम बा पॉलिसी एटी अडॉप्ट करबा दरकार लाइक यूनिवर्सल पेंशन कवरेज जोटा इट विल प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन स्पेसिफिकली जो माने इनफॉर्मल सेक्टर अछन से मानको प्रोवाइड करा देन हायर कंट्रीब्यूशन लिमिट कोन कहले हायर कंट्रीब्यूशन लिमिट higher contribution limit कौन करिवो it will increase the contribution rate and it will encourage voluntary savings it will increase the voluntary saving pension portability among different states private sector रा involvement हेले रिटर्न टा एटी हमको अधिक आसीबो कोन कहली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट रे रिटर्न अधिक आसी हला जो एनपीएस अछि नेक्स्ट पॉइंट एनपीएस बा नेशनल पेंशन स्कीम अछि ये कुछ ताको रिफॉर्म करबा दरकार particularly it is required for the private sector employees इठी better withdrawal option रहइबो ता रिक्वायरमेंट से विथड्रॉ करबो लो फीस बा टैक्स इंसेंटिव रहइबा दरकार देन सोशल पेंशन फॉर एल्डरली पोर जो मानकर के सेविंग नहीं सेमानक पई सोशल प्रोग्राम पेंशन्स लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आनिया दरकार रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एटी मोबाइल पेमेंट डिजिटल अकाउंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये सब को यूज करके ये काम को सिंपल हमें करि परिबा ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम बा सिस्टम को यूज करी हमें काम को सहज करि परिबा इला दिस इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज द कंक्लूजन दैट यू कैन पुट इन देखो एटी प्रत्येक टॉपिक रो डिस्कशन परे मु कंक्लूजन देई छी देयर इज अ बॉडी पार्ट देयर इज इंट्रोडक्शन एंड देयर इज कंक्लूजन डायरेक्टली आपको बुझिला परे डायरेक्टली ए कांसेप्ट को बा ए नोट्स को आपण मेंस रे आंसर लिख परिबे so prepare your own editorial analysis notes gs 1 to 3 पई फर्स्ट क्लास रे मु कहितली सेतरी ये सब टॉपिक को लेखि के रखन यार हेल्पफुलनेस ता केते आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन विल डिस्कस केतेटा क्वेश्चन आसीची एवं को जीएस पेपर रु केतेटा क्वेश्चन आसीची केते रिलेवेंट हमर क्लास हमें आफ्टर द क्लास बा आफ्टर द एग्जामिनेशन आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन आई विल डिस्कस ये हला कंक्लूजन ने आपण लिखि परिबे ये कहूँ इंडिया पेंशन सिस्टम नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन जेहेतु एजिंग पॉपुलेशन बढ़ुची जेहेतु यंगेस्ट स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन को हमें हरैबा को लागुची धीरे धीरे लूज करबा को जाउची इनफॉर्मल सेक्टर रो पार्टिसिपेशन अधिक होउची इनएडेक्वेट सेविंग्स इज देयर इनएडेक्वेट कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इज देयर ये सब को इंप्रूव करिया पई हमको नेशनल पेंशन स्कीम जहा जा अछि ताको रिफॉर्म करबा दरकार बा इनफॉर्मल सेक्टर को एथरे इंक्लूड करबा दरकार एता माने देखंतु एठी हमें केते गोटे जिंस देखैले एगुडा सब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फ्यूचर रे कोन हो से कथा बुझैले एठी हमें सॉल्यूशन कहूचे एई वे रे सॉल्यूशन कले डेवलप होई परिबो ता माने कंक्लूजन दीटा जिंस रहिला प्रॉब्लम सहित फ्यूचर रो प्रॉब्लम सहित सॉल्यूशन कोन बुझ पाले एटु क्वेश्चन लिख परिबे because of overage population because of old age population because of increase in old age population because of increase in old age population reform in pension schemes is need of the hour examine ये क्वेश्चन लिखिबे पेंशन रिलेटेड सो 3-4-5टा क्वेश्चन देली एटी आउ किछि क्वेश्चन जो जो टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन कले से टॉपिक को बाछि के लिखिबे तले हम कोन टॉपिक आज डिस्कशन कले जस्ट रिकैप इंडिया रे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी काहे की दरकार एयर पैसेंजर्स सेफ्टी ऊपर डिस्कशन कले डिफेंस एक्सपोर्ट एंड कंप्लायंस टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ then national credit framework by NEP then we talked about Indian pension system so this is the summary of this session so that's all for this lecture next class रे मैं आउ आपको डिस्कशन करिबा thank you very much समस्त क्लास को करिवे नोट्स करिवे if you have any doubts then let me know through the comment section ने अपन डाउट पचारि परिबे and I will get back
So let's wind up this session. Next class रे हम आगो आहुरी अधिक डिस्कशन करबा ये स्पेसिफिकली जो माने ओसीएस एग्जामिनेशन दोचंती मेंस परीक्षा को फोकस करतने समान को पाई ये क्लास. So please try to take benefit and advantages of this session. That's all for this session. Thank you very much. Thank you.